हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ साइंस ज्ञान। इस वीडियो में हम एमपीपीएससी के लाइफ साइंस सेट पेपर के सॉल्यूशंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस होते हैं। अब लाइफ साइंस के क्वेश्चन 51 से शुरू होंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स अकॉर्डिंग टू डिक्रीज इन दियर बॉन्ड एंगल्स। सो दिस इज केमिस्ट्री क्वेश्चन। So the correct answer of this question is option A. H2O is having highest bond angle and which decreases further. Our next question is, intramolecular hydrogen bonding is found in hydrogen fluoride, M chlorophenol, water, O chlorophenol. हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी। इन ओ क्लोरोफिनॉल देयर इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, फॉर विच हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी। इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन half life period is directly proportional to initial concentration of solution. हमारा अगला क्वेश्चन है, if a hydrogen ion concentration in a solution is 1 gram mole per liter, then pH of solution is 7, 14, 8 और 0। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी। The pH will be 0 in this case. हमारा अगला क्वेश्चन है, substrate concentration at which an enzyme exhibits half the maximum velocity is known as Pmax, concentration S, Km, K equivalent. Our correct answer is option C. At Km value, substrate concentration is half the maximum velocity. हमारा अगला क्वेश्चन है, आइसोजाइम इज कैरेक्टराइज्ड एज नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम विद सेम क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, सिमिलर एंजाइम्स दैट कैटलाइज डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस, मल्टीपल फॉर्म ऑफ गिवन एंजाइम्स दैट कैटलाइज सेम टाइप ऑफ रिएक्शन। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी। आइसोजाइम्स आर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ गिवन एंजाइम दैट कैटलाइज सेम टाइप ऑफ रिएक्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन 1967 विच ऑफ द फॉलोइंग को एंजाइम्स क्लासिफाइड एज विटामिन। को एंजाइम एसएच, को एंजाइम क्यू, टीपीपी, पायरोक्सीडेक्सल फॉस्फेट। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी। को एंजाइम क्यू in 1967 classified as vitamin. Our next question, in oxidative phosphorylation, oxidation of one molecule of NADH produces 2 ATP, 3 ATP, 4 ATP, 1 ATP। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी। In oxidative phosphorylation, oxidation of one molecule of NADH produces 3 ATP molecule। हमारा अगला क्वेश्चन है, फेस ऑफ सिस्टर्नी फॉर्मिंग डिक्टियोसोम इज हैविंग प्रॉक्सिमल फेस जनरली कॉन्वेक्स, डिस्टल फेस जनरली कॉनकेव, प्रॉक्सिमल फेस जनरली कॉनकेव, डिस्टल फेस जनरली कॉन्वेक्स।
Our correct answer is option A. Face of cisterniforming dictysome is having proximal face generally convex. हमारा अगला क्वेश्चन है राइबोफेरिन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स पिगमेंट्स ओलिगोसैकेराइड्स लिपिड्स. हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए राइबोफेरिन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स. Which type of stones are very similar in different species? H2A, H1B, H2B, H2A, H2B, H3, H4, H2A, H4, H1, H2B, H4, H3, H1, H2A. Our correct answer is option B. H2A, H2B, H3 and H4 are very similar in different type of species. हमारा अगला क्वेश्चन है मूवमेंट ऑफ आयंस थ्रू सेल मेम्ब्रेन is determined by ion size, solubility of lipids, the charge on them, all of the above. सही आंसर है ऑप्शन डी. Movement of ions through cell membrane is determined by all of these characters of ions. हमारा अगला क्वेश्चन है सोडियम पोटेशियम पंप मैकेनिज्म इज डिस्कवर्ड बाय हॉडकिन, केन्स, लॉरेंस, फ्रे, एडिटिंग, जैकब निकोलसन. हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए हॉडकिन एंड केन discovered mechanism of sodium potassium pump. हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव बिगेस्ट परसेंटेज ऑफ अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड इन दियर मेम्ब्रेन? अंटार्कटिक फिश, डेजर्ट स्नेक, ह्यूमन बीइंग, पोलर बियर. हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए. सो द lower the temperature, higher the unsaturated phospholipids in their membrane. So Antarctica is having lowest temperature, so the living beings living there will have highest percentage of unsaturated phospholipid to survive. Our next question is during exponential growth the number of generation per hour is termed as generation time, exponential rate, growth rate, log rate, growth rate. Our right answer is option D. This is known as growth rate. हमारा अगला क्वेश्चन है which is the correct statement from these four statements, which are the correct? Our correct answer is option B. So statement 1, 2 and 3 are correct. Like partition coefficient in most cell membrane is similar to that of olive oil and water, and partition coefficient can be measured by mixing solute with an oil water. Partition coefficient is the concentration of the solute in the oil divided by concentration in aqueous phase. So this is wrong statement. So 1, 2, 3 are correct. Option B is correct answer. In which among the following does N-formyl methionine tRNA plays important role in translation? Eubacteria eukaryote chloroplast, Eubacteria mitochondria chloroplast, eukaryote archaebacteria, Eubacteria eukaryote mitochondria chloroplast. So if you remove eukaryote from option, you will have right option. Option B. In Eubacteria mitochondria and chloroplast, N-formyl methionine tRNA plays important role in translation process. Our next question is in relation to genetic codes, which of the following is correct?
UAG ochre, UA amber, UGA opal. So correct answer is option B. UAG is amber, UA is ochre, UGA is opal. So you have to remember these codons, which are stop codons. Our next question is the transition between lytic and lysogenic stage of lambda phase is due to site-specific recombination, homologous recombination, replicative recombination, hybrid of homologous and non-reciprocal recombination. Our correct answer is option A. It is site-specific recombination. Option A is correct answer. हमारा अगला क्वेश्चन है Xeroderma pigmentosum is a genetic disorder. It is associated with neurological abnormalities, and people suffering from this disease are extremely light sensitive and readily develop sunlight induced skin cancer. This is failure of which process? Nucleotide accession repair, base excision repair, a homologous recombination, mismatch repair. Our correct answer is option A. It is failure of nucleotide excision repair, NER. Our next question is what are N and Q proteins in lambda phase? Both are transcription termination factors, both are anti-termination factors, both are attenuation factors. Anti-termination for immediate early genes and delayed early genes is done by protein Q and protein N respectively. Our correct answer is option B. Both are anti-termination factor. So option B is correct answer. हमारा अगला क्वेश्चन है in E. coli which among the following enzyme relaxes DNA by increasing a linking number? Topoisomerase 1, 2, 1 and 3 and 4. Our correct answer है option B. Topoisomerase 2 relaxes DNA by increasing linking number. हमारा अगला क्वेश्चन है माइक्रो आरएनए यानी mRNA आर एसोसिएटेड विथ splicing of pre-mRNA, regulation of gene expression by blocking translation of specific mRNA and causing degradation of mRNA, protection of germline from transposable elements, regulation of X chromosome inactivation. तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी. So microRNA or miRNA regulate gene expression by blocking translation of specific mRNAs and mRNA and causing their degradation. So हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोकार्योटिक sigma 32 factor of RNA polymerase is responsible for sporulation in Bacillus subtilis, responsible for synthesis of heat shock proteins in E. coli, induced when bacteria make transition from growth phase to stationary phase, is used in conditions of nitrogen starvation in E. coli. So our correct answer is option B. It is responsible for synthesis of heat shock protein HSPs in E. coli. हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग is example of lipid based second messenger? Cyclic AMP, inositol phosphate 3, calcium ions, protein kinases. हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी inositol phosphate 3 और example of lipid based second messenger. हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग cellular communication involves transfer of small molecules or ion directly between adjacent cells? Endocrine signaling, paracrine signaling, gap junction signaling, synaptic signaling. So हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी. In gap junction signaling there is a transfer of
small molecules or ion directly between adjacent cells. So these cells are connected by junctions. So here there is transfer of small molecules and ion. This is known as gap junction signaling. हमारा अगला क्वेश्चन है, desmosomes are cell junctions that provide strong adhesion between cells. So which protein is major component of desmosomes? Catherines, integrins, selectins, collagen. So हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, कैथेरीन्स आर protein which is found in desmosomes. हमारा अगला क्वेश्चन है, CHEA protein in bacterial chemotaxis acts as chemoreceptor, phosphatase, histidine kinase, channel protein. हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी. So CHEA protein in bacterial chemotaxis. CHE stands for chemotaxis. So they are histidine kinase. हमारा अगला क्वेश्चन है, which of the following is an example of autocrine signaling? Nerve cells transmitting a signal to muscle cell, hormones secreted by a pancreas affecting liver function, sensory receptor cells in the eye responding to light stimuli, cancer cells releasing growth factor that stimulate their own growth. So हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी. So this is example of autocrine signaling. They regulate growth of their own. हमारा अगला क्वेश्चन है, tumor suppressor genes play a crucial role in preventing the development of cancer. So which of the following is an example of tumor suppressor gene? HER2, P53, EGFR, PCR, ABL. So हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, P53 आर ट्यूमर सप्रेसर जीन्स. हमारा अगला क्वेश्चन है, विच पेयर ऑफ जीन्स कॉमनली इम्पार्ट इन DNA डैमेज मैकेनिज्म? साइक्लिन, D1 सीमिक, P53 कैस्पेसिस 3, ATM ATR, BRCA P53. सो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, ATM एंड ATR are pair of genes commonly impart in DNA damage mechanism. हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ डेंड्राइटिक सेल्स इज टू present antigen to T cells, produce antibodies, engulf and kill pathogen, release histamine during allergic reaction. हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए. सो डेंड्राइटिक सेल्स present antigen to T cells. हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ एजिंग इज नोन एज एंटोमोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, जेरोंटोलॉजी, जूलॉजी. सही आंसर है ऑप्शन सी, जेरोंटोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ एजिंग. सो एंटोमोलॉजी इज स्टडी ऑफ इंसेक्ट, एम्ब्रियोलॉजी इज स्टडी ऑफ एम्ब्रियो एंड देयर डेवलपमेंट, एंड जूलॉजी इज स्टडी ऑफ एनिमल्स. हमारा अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक प्लेस इन गेमेटोजेनेसिस? Amitotic, mitotic, amitotic, meiotic, only meiotic, mitotic and meiotic. सही आंसर है ऑप्शन सी. When there is gametogenesis, so 2n chromosome convert into n. So only meiotic division will be there, where chromosome number will be half in gametes. हमारा अगला क्वेश्चन है, acrosome is formed from which cell organelle? ER, Golgi bodies, mitochondria, ribosome. हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी. सो acrosome in sperm is made up of or formed from Golgi bodies. हमारा अगला क्वेश्चन है, surface layer of sperm contains a proteinaceous substance known as anti-fertilizing,
जाइगोटीन, फर्टिलाइजिंग, ट्यूबुलिन। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। सरफेस लेयर ऑफ स्पर्म कंटेन्स अ प्रोटीनेशियस सब्सटेंस नोन एज एंटी फर्टिलाइजिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है प्राइम फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, फंक्शनलेस। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी। सो कार्पस ल्यूटियम secretes female hormones and so they are endocrine. They function as glands which is endocrine. हमारा अगला क्वेश्चन है द बेस्ट नॉन सेल लाइन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ह्यूमन कार्सिनोमा इज BHK cells, CHO cells, LN3T3 cells, HeLa cells. हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी। HeLa cells are best known cell line obtained from human carcinoma. हमारा अगला क्वेश्चन है विच कैविटी इज फाउंड इन गैस्ट्रुला स्टेज ऑफ एन एम्ब्रियो? प्लास्टोसील, गैस्ट्रोसील, एम्फीब्लास्टुला, यूटेराइन कैविटी। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी। सो इन गैस्ट्रुला स्टेज ऑफ एम्ब्रियो देयर इज कैविटी नोन एज गैस्ट्रोसील। हमारा अगला क्वेश्चन है इन एग माइक्रोपाइल इज प्रेजेंट इन विच एग? सो इंसेक्ट्स, एलिफेंट, फ्रॉग, बर्ड्स। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। इन इंसेक्ट्स एग माइक्रोपाइल इज प्रेजेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स फाइकोबिलीन with protein in grana of chloroplast is unstable, stable, semi stable, highly stable. So हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी। सो कनेक्शन ऑफ वाटर soluble pigment phycobilin with protein in grana of chloroplast is highly stable. So this is connection, not concentration. हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए एंड डी। बोथ आर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. सो राइजोबियम इज symbiotic and streptococcus is pathogenic bacteria. जो हमारा अगला क्वेश्चन है फोटोसिंथेटिक यूनिट्स इन ग्रीन प्लांट आर फोटोन्स, क्वांटा, क्वांटोसोम्स, क्लोरोफिल्स. हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी. सो क्वांटोसोम्स आर फोटोसिंथेटिक यूनिट्स इन ग्रीन प्लांट्स. ऑप्शन सी इज करेक्ट. हमारा अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज. Complete oxidation of one molecule of glucose. So options are 36, 38, 40 और 8. तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी. So 38 molecules of ATP are produced from complete oxidation of one molecule of glucose. हमारा अगला क्वेश्चन है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल इज द कन्वर्जन ऑफ फैट टू कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट टू फैट, फैटी एसिड टू फैट, नन ऑफ द अबव. हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए. सो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल इज कन्वर्जन ऑफ फैट टू कार्बोहाइड्रेट. हमारा अगला क्वेश्चन है Florism theory of flowering was proposed by Chorad, Blackman, Chelakhan, Garner and Allard. हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी. Chelakhan in 1936 proposed Florism theory of flowering.
हमारा अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट ऑस्मोलाइट विच एक्यूमुलेट ड्यूरिंग साल्ट एंड वाटर स्ट्रेसेस। अमीनो एसिड प्रोलीन, शुगर ग्लूकोज, मैलिक एसिड, स्टार्च। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। सो अमीनो एसिड प्रोलीन is most important osmolytes which protects generally plants during salt stress or water stress। हमारा अगला क्वेश्चन है मोस्ट abundant प्रोटीन ऑन अर्थ शेयरिंग 16% ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन इज इंसुलिन, रूबिस्को, आरयूडीपी, पीईपी। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, रूबिस्को इज मोस्ट abundant प्रोटीन ऑन अर्थ and which is 16% of chloroplast protein। हमारा अगला क्वेश्चन है इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हेल्प एंटीबॉडीज टू reabsorb and immunoglobulin are the key participants in non-specific defense mechanism, recognize and bind antigenic determinants are specialized class of white blood cells। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी। सो immunoglobulin they are antibodies recognize and bind antigenic determinants of an antibody of an antigen which is part of some pathogen। हमारा अगला क्वेश्चन है सेकेंड हार्ट साउंड is caused by closure of aortic and pulmonary valves, ventricular filling, ventricular systole, closure of mitral and tricuspid valves। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। सेकेंड हार्ट साउंड इज caused by closure of aortic and pulmonary valves। हमारा अगला क्वेश्चन है मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम alveoli in blood into the blood in pulmonary capillaries is done by active transport, facilitate diffusion, filtration, passive diffusion। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, passive diffusion। So oxygen is a gas which diffuses without requiring any energy from alveoli to the blood in the pulmonary capillaries। हमारा अगला क्वेश्चन है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज अकर इन द मेडुलरी कलेक्टिंग ट्यूब, प्रॉक्सिमल ट्यूब, डिस्टल ट्यूब, लूप ऑफ हेनले। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज अकर इन प्रॉक्सिमल ट्यूब ऑफ हेनले लूप ऑफ नेफ्रॉन। हमारा अगला क्वेश्चन है reabsorption of sodium in the kidney is increased by thyroxine hormone, ADH hormone, atrial natriuretic peptide और aldosterone। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, it is done by ANP which is a peptide hormone, atrial natriuretic peptide। ऑप्शन सी is correct answer। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्ले अ रोल इन रेगुलेटिंग फ्लो ऑफ बाइल, गैस्ट्रीन, कोलेसिस्टोकाइनिन, सिक्रिटीन, पेनक्रियोजाइमिन। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, कोलेसिस्टोकाइनिन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ बाइल। हमारा अगला क्वेश्चन है हार्मोन ऑफ पीनियल ग्लैंड इज नोन एज सोमेटोट्रोपिन, मेलेटोनिन, सीरोटोनिन, थायरोट्रोपिन। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी। सो मेलेटोनिन इज अ हार्मोन ऑफ पीनियल ग्लैंड। हमारा अगला क्वेश्चन है सम मैमल्स हैव अ स्पेशल थर्मोजेनिक टिश्यू नोन एज ब्राउन फैट टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नॉर्मल फैट टिश्यू। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। सो इन mammals brown fat tissue is thermogenic tissue, so this is
found maximum amount in newborn babies? हमारा अगला क्वेश्चन है when F1 hybrid plant is crossed with either of parent, the cross is called as test cross, back cross, reciprocal cross, monohybrid cross. हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी. So when F1 hybrid plant is crossed with either of plant, यानी recessive or dominant, mother or father, this cross is known as back cross. हमारा अगला क्वेश्चन है ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स outside the nucleus in eukaryotes is called as extranuclear inheritance, maternal inheritance, cytoplasmic inheritance, all of the above. So हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी. तो transmission of genes outside the nucleus in eukaryotes is known as extracellular, extranuclear inheritance, maternal inheritance, cytoplasmic inheritance. हमारा अगला क्वेश्चन है ट्राइसोमी ऑफ 21 नंबर क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग रिप्रेजेंट विच सिंड्रोम? क्लाइनफेल्टर, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम. तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी. सो ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम इज नोन एज डाउन सिंड्रोम. सो टर्नर सिंड्रोम इज when there is absence of second sex chromosome, only one X chromosome is there, and Patau syndrome is trisomy of 13th chromosome. Klinefelter is hyper female. So there is double XY chromosome. हमारा अगला क्वेश्चन द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ट्रेट अक्रॉस सेवरल जनरेशन ऑफ फैमिली इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पेडिग्री एनालिसिस, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस. हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी. सो स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ट्रेट अक्रॉस सेवरल जनरेशन ऑफ फैमिली इज नोन एज पेडिग्री एनालिसिस. हमारा अगला क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2. सो दीज आर सम कैरेक्टर्स: प्लियोट्रोपी, डोमिनेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, कोडोमिनेंस. सो वी हैव टू मैच विद देयर डेफिनेशन. हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी. So pleiotropy is single gene influences many characters, and dominance is in heterozygotes only one allele is expressed which is dominant, and in polygenic inheritance many genes govern single character, and codominance is in heterozygote both allele express themselves. हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर लिंक्ड जीन? सो दीज आर द स्टेटमेंट. सो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी. Only one is correct. So linked genes are located near each other on same chromosome. हमारा अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिकॉम्बिनेशन एंड लिंकेज.
A recombination results in the generation of parental gene combinations. Complete linkage results in higher non-parental gene combination than parental type. Genetic maps are constructed by using the frequency of recombination being between gene pairs. Enzymology constructed first chromosome map. तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी. So genetic maps are constructed by using the frequency of recombination between gene pairs. This is correct statement. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम 1 with column 2. So these are type of some process like transduction, sexduction, crossing over, mutation. So we have to match with their definition. So transduction is a transfer of DNA by means of phase. So one is 4, crossing over, exchange of genetic material between non-sister chromatids. Mutation is sudden inheritance, inheritable change in genetic material. So 1 का 4, 3 का 2 एंड 4 का 1. सो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी. Our next question is binomial system of nomenclature proposed by Carlos Linnaeus provides a name pertaining to international identification, one generic, one specific name, one scientific, one non-scientific name, both name given by taxonomies. So हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी. One is generic and one specific name. Option B is correct. हमारा अगला क्वेश्चन है इंटरब्रीडिंग एनिमल्स बिलोंग टू द सेम जीनस, स्पीसीज, फैमिली, ऑर्डर. तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी. दे बिलोंग टू सेम स्पीसीज. सो इफ एनिमल्स आर इंटरब्रीडर they will be belonging to same species. Identify the correct sequence of taxa in linear taxonomic hierarchy. Class, order, family, genus, species. So class, family, order, genus, species. Class, order, genus, family, species. Class, order, family, species, genus. So correct order is option A. So class, then order, then family, then genus, or smallest is species. Option A is correct. हमारा अगला क्वेश्चन है लंग्स ऑफ रेप्टाइल्स आर लोकेटेड इन नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन, टेल. हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी. दे आर लोकेटेड इन नेक ऑफ रेप्टाइल्स. हमारा अगला क्वेश्चन है अ ग्रुप और मास ऑफ सेल्स बॉडीज विद इन द ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड साइलोन, गैंग्लियन, न्यूरोग्लिया, न्यूक्लियर. हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी. अ ग्रुप और मास ऑफ सेल बॉडीज विद इन ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड न्यूक्लियस. हमारा अगला क्वेश्चन है इंडियन राइनो इज कंजर्व्ड इन कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क. हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी. सो इन काजीरंगा देयर इज इंडियन राइनोज which are conserved and this is in Assam. So there are so many national parks in Assam where you will find conservation of Indian rhino like Petibora, Manas National Park. So you can remember them.
So International Union for Conservation of Nature and Natural Resources IUCN was formed in 1948, 47, 50, 52. हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए. So IUCN was formed in 1948. हमारा अगला क्वेश्चन है फर्स्ट ट्रूजोड वर्टिब्रेट बिलोंग्स टू क्लास साइक्लोस्टोमेटा, प्लेकोडर्मी, ओस्ट्राकोडर्मी, कॉन्ड्रियोथाइस. हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी. दे बिलोंग टू प्लेकोडर्मी. Our next question is which of the following are the plants of cold and alpine regions and these do not thrive well in heat? Megatherms, mesotherms, echistotherms, microtherms. हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी. So echistotherms are plants of cold and alpine regions which do not survive well in heat. हमारा अगला क्वेश्चन है वाटर ऑफ सॉइल विच इज इजीली अवेलेबल टू प्लांट इज नॉन एज होलार्ड, क्रीशार्ड, एकार्ड, हाइग्रोस्कोपिक वाटर. हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी. तो द वाटर ऑफ सॉइल विच इज इजीली अवेलेबल टू प्लांट इज नॉन एज क्रीशार्ड. ऑप्शन बी इज करेक्ट. Which of the following is wrongly matched? So we have to identify wrongly matched. So there is type of interaction between animals or plants. So you have to match them and we have to identify incorrect matching. So हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी. So amensalism, one species is harmed, other is benefited. So this is parasitism. So in amensalism, one is benefits and others having no effect. So commensalism, one species benefit, other is neither benefited nor harms. Predation, one kills and feed on other species. This is plus minus. Commensalism is plus, no. And protocorporation is type of primitive mutualism. Both benefited. हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सक्सेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द फॉलन लॉक्स ऑफ डिकेइंग वुड एंड ट्री बार्क? हेलोसियर, हाइड्रोसियर, लिथोसियर, सेरुल. हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी. सो दिस इज टाइप ऑफ सेरुल सक्सेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हमारा अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइटोजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया हैविंग हैवी रेनफॉल एंड मैनग्रूव वेजिटेशन? डेक्कन प्लेट्यू, वेस्ट कोस्ट ऑफ मलाबार, ईस्टर्न हिमालयाज, सेंट्रल. सो एट कोस्टल रीजन देयर विल बी मैनग्रूव वेजिटेशन एंड हैवी रेनफॉल. सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. वेस्ट कोस्ट ऑफ मलाबार in Kerala is a region where there will be high rainfall and mangrove vegetation. Option B is correct. हमारा अगला क्वेश्चन है which of the following air pollutants is not matched with its source? Sulfur dioxide paper production, hydrogen sulfide oil wells, hydrogen fluoride aluminum production, mercury coal gasification. So हमारा सही आंसर है. So this question was deleted. So maybe every statement is correct. So this question was deleted by MPPSC.
हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद द लोकेशन. सो गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु, कच्छ इन गुजरात, नंदा देवी इन हिमाचल प्रदेश, सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल. सो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी. सो नंदा देवी is shown in Himachal, which is in Uttarakhand. हमारा अगला क्वेश्चन है which modern mammal is related to Pachycetus, a four-footed extinct mammal? Horse, elephant, lion, whale. हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी. सो Pachycetus, a four-footed extinct mammal, is related to whale. हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सजेस्टेड एज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल. सॉरी, which of the following is suggested as first genetic material? DNA, RNA, peptide, nucleic acid, PNA और complementary DNA. हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी. So peptide nucleic acid was suggested as first genetic material, PNA. हमारा अगला क्वेश्चन है rates of evolution are expressed in Svedberg units, S, Helden unit, H, Operin units, O, time units, T. हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी. rates of evolution is expressed in Helden units, H. हमारा अगला क्वेश्चन है न्यूट्रल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज प्रपोज्ड बाय Fanny Poet, Motu, Kaimura, Simon Eschibacher, Alexander Theory. हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी. मोटू काइमुरा प्रपोज्ड न्यूट्रल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. हमारा अगला क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद माइग्रेशन and other periodic phenomena occur in animals' life is known as chronobiology, ethology, phenology, semiotics. हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी. सो इन phenology, the study of migration and other periodic phenomena which occurs in animals' life is studied. हमारा अगला क्वेश्चन है सोशल ग्रूमिंग और एलो ग्रूमिंग इज एन इम्पोर्टेंट गेस्चर ऑफ. श्रिम्प्स सोसाइटी, प्राइमेट सोसाइटी, लॉयंस प्राइड, नेकेड मोल्स रेड्स कॉलोनी. हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी. इन प्राइमेट सोसाइटी सोशल ग्रूमिंग और एलो ग्रूमिंग इज इम्पोर्टेंट गेस्चर. So in langur, monkey, you can see they are grooming each other. So it is character of primate society. Chinks and sea are the alarm calls of starlings, herringulls, mountain chickadees, chaffinches. हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी. सो चिंक एंड सी आर द अलार्म कॉल्स ऑफ चेफिंचेस. हमारा अगला क्वेश्चन है नोबेल प्राइज ऑफ 2020 इन केमिस्ट्री फॉर द डिस्कवरी ऑफ CRISPR-Cas9 वाज अवार्डेड टू इमानुएल कार्पेंटर एंड जेनिफर डोडेना, जॉन पॉल जियोचर्च, जांग एंड जोंग, रोजलिन फ्रैंकलिन एंड एरिक एंडरसन. सो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए. सो फॉर डिस्कवरी ऑफ CRISPR-Cas9 सिस्टम फॉर जीनोम एडिटिंग वाज गिवन टू
चापिएंटर एंड डोडियना। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन इज ट्रू? So marker assisted selection is only applicable in plant breeding and not animal breeding. Marker assisted selection relies solely on traditional breeding methods without involving DNA analysis. Marker assisted selection accelerates breeding process by DNA manipulating an organism DNA, or marker assisted selection is a random process that does not require specific genetic marker. So हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी. So this is true about marker assisted selection. So marker assisted selection accelerates breeding process by direct manipulating an organism DNA. हमारा अगला क्वेश्चन, which of the following factors should be considered when selecting a culture medium for specific cell types? pH level, osmolarity, growth factors, all of the above. हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी. So pH, osmolarity, growth factors all are required for constituting culture medium for specific cell types and which is optimized for specific cell types cultures. हमारा अगला क्वेश्चन, which of the following is example of electrochemical biosensor? Photonic biosensor, piezoelectric biosensor, amperometric बायोसेंसर, थर्मल बायोसेंसर. हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी. सो एम्फेरोमेट्रिक बायोसेंसर इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर. हमारा अगला क्वेश्चन है, हाइड्रेटेड सिंथेटिक सीड इज प्रोड्यूस्ड बाय एनकैप्सुलेटिंग सोमेटिक एम्ब्रियो विद सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम एल्जिनेट, सोडियम एसीटेट, कैल्शियम नाइट्रेट. हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी. हाइड्रेटेड सिंथेटिक सीड इज प्रोड्यूस्ड बाय एनकैप्सुलेटिंग सोमेटिक एम्ब्रियो विद कैल्शियम एल्जिनेट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग ग्लूकोज आइसोमरेज in the cells of streptomyces by heat treatment so that in a batch process glucose is converted to fructose. The process is known as Takasaki process, Gist Brockate's process, Reynolds Tobacco Company process, Okazaki process. हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए. दिस प्रोसेस इज नोन एज टाकासाकी प्रोसेस. हमारा अगला क्वेश्चन है, विच टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड इन जीनोमिक रिसर्च टू कंपेयर जीन एक्सप्रेशन लेवल्स बिटवीन डिफरेंट सैंपल्स? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR, फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन फिश टेक्निक, माइक्रोएरे एनालिसिस, DNA sequencing. So in all of these options only C is correct. So microarray analysis is used in genomics research to compare gene expression levels between two different sequences. So RNA-seq is also do the same, compares gene expression level between different samples. So you can also do northern blotting to check few genes expression, but at global level you have to use microarray and RNA-seq analysis. Which of the following techniques is used to determine gene expression levels? So again, this is repeated questions. Gene expression level, so PCR, DNA sequencing, microarray, gel electrophoresis. Again, the answer is option C, microarray analysis. So restriction enzyme EcoR1 recognizes and act at which DNA sequence? So you have to remember some of the sequences of important restriction digestion enzymes. So EcoR1 is one of them. So options are GTTAAC, ZCAAG,
GAATTC, TAGCC। सो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, GAATTC। So this is palindromic sequence, or this is site for recognizing for restriction by equarvon enzyme. Option C is correct. और अगला क्वेश्चन है, स्वेटबर्ग यूनिट इज एसोसिएटेड विद पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, पॉलीमराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी। सो दिस इज स्वेटबर्ग यूनिट इज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लंट कटिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट डीएनए स्ट्रैंड एट ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी। सो ब्लंट कटिंग restriction enzymes cut DNA strand at phosphodiester bond of DNA. Option B is correct. हमारा अगला क्वेश्चन है, which is the proper order of steps in northern hybridization? RNA isolation, probe labeling, electrophoresis, autoradiography. RNA isolation, probe labeling, autoradiography, electrophoresis, probe labeling, RNA isolation, electrophoresis, autoradiography, RNA isolation, electrophoresis, probe labeling और autoradiography। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी। So for northern blotting, first you have to isolate RNA from samples, then run a gel which is gel electrophoresis, then label it, probe labeling, and then there will be autoradiography. So after electrophoresis you have to transfer your bands on some membrane and apply labels which are radio labeled or fluorescence labeled, which will bind to your target gene or RNA, and after doing autoradiography you will see some signals which will recognize by bands only in your sample which are having your target mRNA. हमारा अगला क्वेश्चन है, वोल क्रोमोसोम पेंट एनालिसिस इज कॉमनली डन बाय कॉलोनी एसे, फ्लो साइटोमेट्री, फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, एलाइसा। फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी। So whole chromosome paint analysis commonly done by FISH technique, fluorescence in situ hybridization technique. Option C is correct. हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, which chromatography technique is most appropriate for purification of cloned stacked proteins? Affinity chromatography, cation exchange chromatography, anion exchange chromatography, gel filtration क्रोमेटोग्राफी। सो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इज द क्रोमेटोग्राफी टेक्निक मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ क्लोन्ड हिज टैग्ड प्रोटीन्स। सो हिज टैग ऑफ अ प्रोटीन विल बाइंड टू हिज टैग antibodies and you will isolate your protein after purification. So option A is correct answer. So thank you for watching the video. If you like the video, please share and subscribe the channel for more such videos important for various exams. Thank you for the watching. Thank you.